ओके, ऑल राइट, लेट्स बिगिन। पिछली वीडियो में हमने इंडिया की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को समझा था। राइट। और हमने बात की थी किसी डायरेक्ट टैक्स, तो हमने पहले बात कर ली थी। इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको एक्साइज ड्यूटी बताया था। मैंने आपको कस्टम ड्यूटी और उसमें तीन तरह की जो बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको एक और इनडायरेक्ट टैक्स वैट के बारे में बताया था। और ये बताया था कि वैट में हर एक स्टेज पे हर एक स्टेज पे क्या होती है, हर एक स्टेज पे बिल्स एंड इनवॉइसेस जनरेट की जाती है। इससे टैक्स एवेजन की पॉसिबिलिटी को कम किया जा सकता है। मैंने आपको ये बताया था कि आज की वीडियो के लिए कि आज की वीडियो में हम एक और इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसको जीएसटी कहते हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी से पहले मैंने आपको एक्साइज ड्यूटी और वैट, इनके बारे में बताया था। क्योंकि एक्साइज ड्यूटी को समझने के लिए आपको, सॉरी, जीएसटी को समझने के लिए आपको एक्साइज ड्यूटी और वैट किस तरह से काम करती है वो समझना जरूरी था। तो जाकर के आपकी जीएसटी आसान हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही टैक्स ये दोनों ही टैक्स is merged into a single tax called GST. So in this video, we will be explaining about, we will be learning about another indirect tax, and a very important indirect tax, which is called GST or Goods and Service Tax. So give the headline GST, यानी कि Goods and Service Tax. गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है जीएसटी? बिफोर वी अंडरस्टैंड जीएसटी, you should ask a better question. Why जीएसटी? क्यों जीएसटी लाई गई? पहले की टैक्स स्ट्रक्चर में क्या दिक्कत थी जिसके जगह पे जीएसटी लाई गई? दिस इज द बेटर क्वेश्चन यू शुड आस्क. So GST is simply goods and service tax. It is another indirect tax which is on value addition. Definition is so simple. GST is an indirect tax imposed on imposed on each stage each stage of the entire supply chain. Each stage of the entire supply chain. पूरी सप्लाई चेन के हर एक स्टेज पर जीएसटी एज एन इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाई की जाती है, एज वैल्यू एडेड, नोट एज ऑन वैल्यू एडेड.
So this is the definition of GST. We will come to this definition a little later. But first we need to understand why GST was introduced. I'm going to explain this definition. I have prepared a 10 point for GST. So in that 10 point, you will get everything that you need about GST for your general understanding as well as for your examination point of view. This definition is already included in that 10 point. So I am leaving this definition for now, but very soon I will be explaining the same thing word by word, bit by bit, a little later. So the better question, as I said, you should ask why GST was introduced. What was the problem in early pre-GST regime? GST से पहले क्या दिक्कत आती थी? So GST was introduced in which year? It was introduced on 1st July 2017. 1 जुलाई 2017 में GST को इंट्रोड्यूस किया गया. सो प्री जीएसटी, जीएसटी से पहले जीएसटी से पहले we had 17 different indirect taxes. 17 different indirect taxes imposed by both center and states. सेंटर और स्टेट 17 अलग अलग तरह की इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज करते थे. 17 अलग अलग तरह की इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज करते थे. इसका रिजल्ट क्या हुआ? जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, एक अल्कोहल के एग्जाम्पल को लेकर के, कि अगर कोई अल्कोहल 2,000 रुपए की होती है और उस पर सेनवैट लगती है, यानी कि सेंट्रल वैट या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 25%. So at the point of manufacturing, before this product is taken out for sale, the price has already become 2,500. On the top of it, VAT is applied, let's say at the rate of 20%. So additional 500 is added to the 2,500. So the final price, supposing that no other tax is imposed on it, the final price the consumer has to pay is 3,000. Since this is an indirect tax and इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन मैंने जब आपको बताई थी, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बताई थी कि इनडायरेक्ट टैक्स वैसी टैक्स होती है, इनडायरेक्ट टैक्स वैसी टैक्स होती है जो कि जिसकी बर्डन इज फाइनली shifted to द कंज्यूमर. तो इसकी बर्डन फाइनली कौन पे करता है? कंज्यूमर पे करता है. सो द बर्डन finally falls on the consumer. And this is just two taxes, central excise duty and VAT. And as I have told you, before GST, there were 17 different types of indirect taxes imposed by both center as well as states. And we have seen here that already on excise duty, VAT is applied. So this is an ideal situation of tax on tax. And this is just two taxes only. And out of 17 taxes, at least 4, 5, 6 different taxes apply on the same product. Because as we go on further, we had sales tax, both central as well as state sales tax. Then we have octroi duty. Then we had entry tax. So all these different types of taxes
applied on a product or an item or an commodity or a service. So if we consider the cumulative effect of tax, that we call cascading effect. What is cascading effect? Cascading effect of टैक्स. कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब है कि जैसे मान लो आप पर एक टैक्स लगी इसके ऊपर आपके दूसरी टैक्स लग रही है. अब T1 प्लस T2 के ऊपर आपकी तीसरी टैक्स लग रही है. अब नेक्स्ट टैक्स आपको T1 प्लस T2 प्लस T3 के ऊपर एक चौथी टैक्स लगेगी. तो एट ईच स्टेज you can see the tax burden is increasing, and since these are indirect taxes, so the final price will include all these taxes, and who will ultimately pay these taxes? Consumers. We हम पे करेंगे अल्टीमेटली इन सारे टैक्सेस को. So what we need to understand is simple economics. Simple economics. Let's say if there is cascading effect of taxes. I hope you understand this cascading effect of taxes, right? You can always ask me any problem you find in my lectures. You can directly ask me. You can write your query in the comment section, or you can join the Telegram group where I am relatively more active. So because of this cascading effect of taxes, what happens before it reaches the market? The price of commodity had increased significantly because there were so many taxes imposed on the on that product. So if price of commodity is increased, what does simple relation of price and demand says? If price increases, demand of that commodity will fall. Simple price and demand relationship, theory of demand, theory of demand and supply. So if price of commodity increase, its demand decreases. Similarly, if tax burden if tax burden falls heavily on the individual, tax burden falls heavily on the consumer. So what happens to his consumption pattern? His consumption will decrease. So if consumption goes down, what happens to the production? What happens to the production? Production will increase or decrease. अगर कंजम्पशन, जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर मार्केट में फाइनली कंज्यूमर को अपनी सामान बेच रहा है. फाइनली बीच में होलसेलर रिटेलर आते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ. होलसेलर रिटेलर से होते हुए फाइनली कंज्यूमर तक पहुंच रही है. तो अगर कंजम्पशन सामान नहीं खरीदेगा तो मैन्युफैक्चरर के पास ऑलरेडी उसकी जो पिछले साल की स्टॉक है वो पाइल अप होती जाएगी. स्टॉक पाइल विल इंक्रीज. तो ये नई प्रोडक्ट निकालेगा या नहीं निकालेगा? इसकी जो प्रोडक्शन है ये अपने प्रोडक्शन को कम कर लेगा, क्योंकि डिमांड नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, डिमांड नहीं है. सो प्रोडक्शन विल गो डाउन. If consumption, production, demand, everything goes down,
What do you think will happen to the economy? Simply, I'm asking a basic question. What happens to economy? GDP will increase or decrease. GDP will also come down. If GDP comes down, then what happens to the government revenue? Government revenue will increase or decrease. Government revenue will fall. Why it will fall? I will tell you. See, अगर टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा पड़ रही है इंडिविजुअल्स पे, तो व्हाट हैपेंस देन, ये मैं ऐसी आपको इकोनॉमिक बिहेवियर बता रहा हूँ। इकोनॉमिक को आप आइडियल सिचुएशन मत समझना। कभी भी इकोनॉमी आपको पढ़नी है तो आपको बिहेवियर को ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, बिहेवियर समझनी पड़ेगी। तो जब अगर टैक्स बर्डन बढ़ती है तो वहां पे टैक्स इवेजन की पॉसिबिलिटी होने लगती है। टैक्स इवेजन ज्यादा होने लगती है। जहां पे पॉसिबल है लोग टैक्स इवेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास पैसे बचे। दे नीड सेविंग, सो दे स्टार्ट इवेडिंग टैक्स। सो टैक्स इवेजन अगर होगी तो इससे गवर्नमेंट रिवेन्यू, क्योंकि गवर्नमेंट के रिवेन्यू में मैंने आपको बताया था कि टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू दोनों आती है, और मेजर पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू इज टैक्स रिवेन्यू। सी, if there is more and more incidence of tax evasion, so government revenue will fall down. If government revenue falls down, then government expenditure will fall down. Government expenditure will fall down. It will again distort the economic development, as well as it will deteriorate the social development we have achieved so far. Because for any development, we need revenue. So if there is no revenue, there is less revenue, then there comes a concept of opportunity cost, that you must be knowing that the value of one item that is late gone to achieve another objective, in basic terms, that is opportunity cost. So because of loss of revenue, one way or other, सोशल डेवलपमेंट के फील्ड में गवर्नमेंट अपनी हाथ पीछे खींच लेगी, और सोशल डेवलपमेंट को एक यहाँ पे इम्पीडिमेंट मिलेगा, रुकावट मिलेगी, धक्का मिलेगा। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, राइट? एज यू कैन सी, everything is connected. And this was because government was collecting 17 different types of taxes, indirect taxes. So what happened now is, finally, in 2003, an act was passed. In 2003, an act was passed. I am sure you must be familiar with the name. It was called Fiscal Responsibility and Budget Management Act, FRBM Act. 2003 में FRBM Act पास हुई. I am not going into the details of this act. So FRBM Act was introduced in 2003, and for the working of this FRBM Act, for the implementation of the FRBM Act, a task force or a committee was formed for the implementation of FRBM Act. A task force was formed. That task force was known as the famous Kelkar
कमेटी, केलकर कमेटी। केलकर कमेटी के चेयरमैन थे विजय केलकर, एंड ही वाज आल्सो द president of or the chairman of 13th Finance Commission. So Kelkar Committee was formed, and Vijay Kelkar was the chairman of this committee. So under the chairmanship of Vijay Kelkar, Kelkar Committee was formed for the implementation of the provisions of FRBM Act. This Kelkar Committee found that because of different indirect taxes and various indirect taxes, there is so many problem in the society, in the economy, because of various indirect taxes, and at different levels and at different stages there are various impediments in the economic growth and development. So almost all the stakeholders in the entire supply chain was facing this difficulty. Entire supply chain was being disturbed by various indirect taxes imposed at different levels and at different rates and with different compliance requirements, because every tax, every duty has its own rules and regulations. So almost all the stakeholders, be it manufacturer, be it transporter, be it importer, and finally the consumers who were hit hard by the price rise, because ultimately the cumulative tax increased the final price of the product which the consumer had to pay. So everyone, right from the manufacturer to the consumer, was affected badly by the cascading effect of the taxes and other requirements. जैसे अल्टीमेटली टैक्स तो चलो कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, लेकिन अपनी जब मैन्युफैक्चर कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको मार्केट चाहिए होगी। अब वो मार्केट में जाएगा तो मार्केट में जाने से पहले ही उसको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे उसको तो पहले पे करनी पड़ेगी ना। सिमिलरली ट्रांसपोर्टर हैज टू पे द एंट्री टैक्स and other logistic related taxes. So everyone has to pay tax first, and then they can claim their tax what they had paid. So they get their claim back, by the time they get their claim back, their capital is locked up. Their capital is locked up. And because of various compliances requirements, this locked up capital took a significant amount of time to get disbursed back into their accounts. And a business to run smoothly need freed capital. So because of this, the manufacturers were being affected, transporters were being affected, and finally consumers were ultimately affected because of price rise. So entire supply chain was getting disrupted because of various indirect taxes imposed by center as well as states at different stages of supply chain. So this Kelkar committee, Vijay Kelkar suggested that instead of imposing
various indirect taxes, all the indirect taxes should be merged. Indirect taxes should be merged. These indirect taxes should be merged together into a single tax framework. What Vijay Kelkar committee suggested that these indirect taxes should be merged into a single tax structure called GST, called GST or Goods and Service Tax. And he recommended several benefits of this merger, of this single tax structure, single indirect tax structure. What he suggested that if the government merges all these indirect taxes together, then there will be tremendous benefit that it will free up for the economy. Tremendous opportunity for growth will be freed up. And of his recommendations, basically suggestions, what he suggested, what he showed actually, he showed some benefits of single indirect tax by merging different taxes together, different indirect taxes together. So first, what it will do, it will bring down, it will bring down the cascading effect of taxes. It will bring down the cascading effect of taxes. You understand this? I explained it to you, what is cascading effect of taxes and how a single indirect tax will bring down this cascading effect. The burden which ultimately fail on the consumer will be less now. So if cascading effect of tax will be lesser, then what happens to the consumption? Consumption will certainly increase. If consumption will increase, if consumption is increased, production will also increase. Ultimately, GDP will rise. And I have told you that the tax paying behavior of citizens. So if there are too much taxes and if the burden feels heavily on the pocket of individuals, they devise a loophole, they find a loophole to evade taxes in whatever capacity they can. जहां पर भी वो टैक्स इवेट कर सकते हैं वो टैक्स इवेट करेंगे, करना चाहेंगे और करते भी हैं. सो टैक्स, तो अगर ये कास्केडिंग इफेक्ट ना हो, अगर लोगों के पास पैसे हो, तो टैक्स रेवेन्यू विल tax revenue will go up. Basically, this indicator we understand as tax to GDP ratio in economy. Tax to GDP ratio. So what is the share of tax in the GDP? That if it is higher, it is a sign of healthy economy.
So tax revenue will also increase. It will make exports competitive. It will make exports competitive. देखो अगर मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट कम हो रही है तो एक्सपोर्ट भी वो सस्ते में करेगी। और गवर्नमेंट अलग अलग तरह के टैक्सेस नहीं ले रही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं ले रही है, तो एक्सपोर्ट और भी सस्ती होगी बाहर के मार्केट में। और इंडियन गुड्स की डिमांड बाहर की मार्केट में बढ़ेगी, सो एक्सपोर्ट्स विल बी मोर कॉम्पिटिटिव। इट विल हेल्प इन द seamless movement of goods and services throughout the country. Seamless movement of goods and services throughout the country, जैसा मैंने बताया कि कई सारे चेक पोस्ट पे किसी ट्रांसपोर्टर को अननेसेसरी वहां पे रोका जाता है फॉर चेकिंग ऑफ गुड्स। तो इफ different duties and its compliance requirements are merged together, तो जहां पे प्रोड्यूस हो रही है और जहां पे किसी गुड्स को या सर्विस को पहुंचनी है, आप बस उन दो पॉइंट्स पे चेक कर सकते हैं, बीच में आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इट विल हेल्प इन द अननेसेसरी डिलेज एंड सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री। By the time Vijay Kelkar Committee was set up, more than 150 countries had already implemented GST structure. France was the first country to implement GST back in 1954 itself. And gradually, one by one, various countries started implementing GST. India was rather late in implementing GST. So, what Vijay Kelkar Committee suggested that if we implement GST, it will help in integrating, or it will integrate Indian market with the global market. Indian market with the global market. And finally, it will bring the ideal situation. It will bring the ideal situation of one country, one indirect tax. वन कंट्री वन इनडायरेक्ट टैक्स की आइडियल सिचुएशन ये लेकर के आ जाएगी। So in a way, what Vijay Kelkar committee suggested that implementing GST will prove to be a revolutionary reform in taxation system of India. And as we shall see further as we proceed in our lecture, we will see that indeed GST reform was a revolutionary reform in the tax structure of India.
And as I said, India was rather late in implementing GST. It should have implemented GST sooner. और जैसे 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म जो एलपीजी रिफॉर्म जिसको हम जानते हैं वो अब तक की सबसे बड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म है। उसी तरह टैक्स सिस्टम में, टैक्सेशन सिस्टम में, टैक्स स्ट्रक्चर में जीएसटी रिफॉर्म इज सिमिलर biggest reform India had done since independence. So, taking note of the recommendations of this committee, government constituted a task force. So, taking note of the recommendations of Vijay Kelkar Committee, government constituted a task force, not task force, sorry, government constituted an empowered committee of state finance ministers. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की एक एम्पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। दिस दिस कमिटी was given the task of convincing respective state governments, convincing this respective state governments to embrace GST reform. गवर्नमेंट ने क्या किया? विजय केलकर कमेटी के रिकमेंडेशंस को कंसिडर करते हुए स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की एक एम्पावर्ड कमेटी गठित की और इस एम्पावर्ड कमेटी को एक टास्क दी गई कि स्टेट गवर्नमेंट को, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को कन्विंस करे कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के बदले जीएसटी रिफॉर्म्स को इम्प्रेस करे, इनिशिएट करे और यानी कि जीएसटी में ऑन बोर्ड हो जाए। And this negotiation between center and state kept on going for a long period. The states had two major apprehensions. Initially, states were reluctant to join GST regime because it will have to let go of the tax revenue it was imposing and collecting. So, states had two major apprehensions. The states had two major apprehensions. The states had two major concerns. स्टेट्स का कहना था कि ठीक है हम जीएसटी में आ जाएंगे लेकिन हमारी दो दिक्कतें हैं। अगर ये दोनों दिक्कतों का समाधान हो जाए तो हम जीएसटी वाले में जीएसटी में हम भी जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर लेंगे अपने अपने स्टेट्स में। So what were the two major concerns? First concern was loss of revenue. Loss of revenue. जो स्टेट्स पहले अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज करती थी, कलेक्ट करती थी, अब उनको वो नहीं मिलेगी। उनके बदले एक सिंगल एक टैक्स होगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। So states had this concern of loss of revenue. Second, the states had the concern of loss of
authority over टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो स्टेट्स की अथॉरिटी है वो भी यहाँ पे उनको होनी पड़ सकती थी। ये दो कंसर्न थे स्टेट्स के। एंड आई मस्ट टेल यू दैट जब जीएसटी काउंसिल की शुरुआत के कुछ मीटिंग्स हुए थे तो इनिशियली 4-5 मीटिंग्स में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, तो वो इस पे बिल्कुल भी एडमेंट थे कि वो अथॉरिटी टैक्स अथॉरिटी नहीं दे सकते हैं स्टेट्स को। सो स्टेट्स वर एडमेंट एज वेल कि अगर हमें टैक्स अथॉरिटी नहीं मिलेगी तो हम जीएसटी पे नहीं आएंगे। तो दीज टू वर द प्री कंडीशंस फॉर द स्टेट्स टू embrace जीएसटी or to get on board with GST regime. So how these concerns were addressed, we will soon find out. Now we will talk about, see, I have prepared 10 points for you. I don't know if I told you that earlier. I have prepared 10 points for you with regards to GST. And in these 10 points, 10, 9, 10 or 11, we will see how many points it is there. तो इन 10 पॉइंट्स में जीएसटी से रिलेटेड जो कुछ भी है, जो कुछ भी जो आपको जाननी जरूरी है जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उन सभी पॉइंट्स को मैंने इन 10 पॉइंट्स में इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट these points, and as we proceed you will find that your understanding of GST is much, much better than what you used to understand about GST. So I hope I am getting your attention here. So now let's talk about various aspects of GST. But before that, let me see in my note that if I had left any single point till now. Okay, yes, I have left this important point for you. Yes. So what happened afterwards? Government had these two major concerns, and we will see these two major concerns and how these concerns were addressed quite later. So this empowered committee was constituted, and as a result of this negotiation between center and state, as a result of this negotiation between center and states, as a result of this negotiation between center and state, a blueprint of GST was prepared. A blueprint of GST was prepared. This blueprint was presented in both the houses of parliament as GST bill. ये जो जीएसटी की ब्लूप्रिंट थी इसको जीएसटी बिल के रूप में पार्लियामेंट के दोनों ही सदनों में पेश किया गया, एंड आफ्टर असेंटिंग
After receiving assent from the president, GST Act was passed in August. I think the date was not sure about date, but it was passed in August 2016. GST Act was passed in August 2016, and the implementation began on 1st July 1st July 2017. तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एक्ट इम्प्लीमेंट हो गई। अगस्त 2016 के जीएसटी एक्ट पास हुई, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2017 को शुरू हो गई थी। So the provisions, one of the provisions of GST Act was setting up of a GST council। एक जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई। This GST council was given constitutional status through 101st Constitutional Amendment Act 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई, जिसमें जीएसटी काउंसिल को क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर की गई अंडर आर्टिकल 279 ए। द जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर as its head or chairperson, Union Finance Minister, and states and UTs finance ministers as its members. And this GST council was having a federal structure. And it was an, or it is an rather, apex. It is an apex decision making body. Apex decision making body, which meets every 2 months to take decisions on primarily rates। तो जीएसटी रेट क्या होगी, उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए जीएसटी काउंसिल हर एक 2 महीने में मीट करती है। So it was having a federal structure. Why federal structure? Because states was given 2/3 majority. Decision was taken. Decision is taken on 2/3 majority of the states. So if only 2/3 of the states agree to a particular motion or resolution, then that resolution gets passed in the council. So this was GST council and GST. अब हम बात करते हैं जीएसटी के मैकेनिज्म के ऊपर, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि 10 पॉइंट में मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। So you will give a heading important points
फर्स्ट पॉइंट, जीएसटी इज ए डुअल टैक्स। जीएसटी इज अ डुअल टैक्स। डुअल टैक्स, डुअल टैक्स क्यों? क्योंकि रेवेन्यू इज शेयर, revenue is shared between the states equally। जो रेवेन्यू शेयर होती है वो जो रेवेन्यू कलेक्ट की जाती है वो सेंटर और स्टेट के बीच इक्वली शेयर की जाती है। जैसे हम जनरली हम देखते हैं कि मान लो कि जहाँ पे 18% जीएसटी ला दी गई है या लगाई गई, जहाँ पे 18% जीएसटी लगाई गई है, तो इस 18% में 9% सेंटर की शेयर होगी और 9% स्टेट की शेयर होगी, कंज्यूमिंग स्टेट की शेयर होगी। So GST is a dual tax because revenue is shared between center and states equally. Second point, this is very important point, and you should pay attention here. Since जीएसटी में कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज किया गया, जिसमें सेंट्रल वैट भी है जिसको एक्साइज कहते हैं, और जिसमें स्टेट्स की वैट भी है। सो सेंट्रल वैट और स्टेट वैट्स को मर्ज किया गया। सो इट हैज ए नेचर ऑफ, जीएसटी हैज ए नेचर ऑफ, जीएसटी is in the nature of national VAT, national VAT। तो जीएसटी इज इन द नेचर ऑफ नेशनल वैट। और ये जो वैट है ये क्या लगती है? ये वैल्यू एडेड पे लगती है सप्लाई चेन पे, हर एक स्टेज पे वैल्यू कितनी वैल्यू ऐड हो रही है उस वैल्यू एडिशन पे वैट लगती है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया हुआ है। सो जीएसटी एज ए नेशनल लेवल वैट is applied on each stage of supply chain. So GST is applied on each stage of the supply chain। अब सुन, अब देखो, जैसे मान लो कि आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप वहां पे जीएसटी पे करते हैं। दैट जीएसटी आल्सो इंक्लूड सर्विस चार्ज, सर्विस टैक्स। सो यू एंड अप पेइंग जीएसटी, राइट? कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, टेलीविजन खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, यू एंड अप पेइंग जीएसटी। And since GST as a VAT is applied on each stage of the supply chain, that means right from the manufacturer, understand this point, right from the manufacturer to the wholesaler to the retailer and finally to the consumer. At, at each stage, at each stage, there is a value addition. There is a value addition। यहाँ पे वैल्यू एडिशन है, यहाँ पे वैल्यू एडिशन है। So at each stage there is a value addition and therefore at each stage GST has to be paid। यहाँ भी जीएसटी पे करनी है, यहाँ भी जीएसटी पे करनी है, यहाँ भी जीएसटी पे करनी है। At each stage GST is levied, GST is applied
since there is value addition at each stage. So since burden of GST ultimately falls on the consumer, and as you can see, जब मैन्युफैक्चरर यहाँ पे होलसेलर को सामान बेच रहा है, तो यहाँ पे होलसेलर खरीद रहा है ना, मैन्युफैक्चरर के लिए होलसेलर कंज्यूमर हो गया, मैन्युफैक्चरर के लिए होलसेलर कंज्यूमर हो गया। समझ रहे हैं इस बात को? एक मैन्युफैक्चरर के लिए, मैन्युफैक्चरर किसको सामान बेच रहा है? होलसेलर को। सो मैन्युफैक्चरर के लिए होलसेलर कंज्यूमर हो, सो होलसेलर यहाँ पे ये जीएसटी पे कर रहा है ऑन द वैल्यू एडिशन। So what instead of okay. So in this scenario, since GST has to be ultimately shifted to consumers, so there are chances that there is a case of double taxation because wholesaler, if wholesaler is paying GST, why should consumer pay? So at this stage, at every stage rather, there is a term called input tax credit. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है, जैसे इस केस में मैन्युफैक्चरर विल क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस केस में रिटेलर विल क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट बिकॉज रिटेलर इज ऑलरेडी पेइंग जीएसटी, एंड सिंस जीएसटी की बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर पे शिफ्ट होगी, सो दिस रिटेलर विल फाइल फॉर, विल अप्लाई फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। Input tax credit is nothing but, if you were to understand it, it is nothing but GST on input, GST on input। इसको हम समझेंगे, मैं आपको अभी एक टेबल बना करके समझाऊंगा, एक इंटायर सप्लाई चेन की टेबल मैं अभी आपको बना करके दिखाऊंगा वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगी और आपको समझ में आएगी कि जीएसटी एक्चुअली कैसे वर्क करती है, और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह, ये सारे टर्म्स आपको वहां पे समझ में आएंगे। तो उसके लिए क्या करो आप, पेन और पेपर रेडी है आपके भी, तो मेरे साथ आप भी ड्रॉ करो इस चीज को। एक टेबल ड्रॉ करना, ये टेबल है सप्लाई चेन की। अब इस टेबल में आपको 8 कॉलम बनाने हैं।